Hello everyone. So the question is, let D belongs to R and A, it is a matrix which is given as like this, where theta belongs to 0 to pi. If the minimum value of determinant of A is 8, then the value of D is, we are having 4 options. We have to calculate the answer and then take which of the following option is the correct option. So basically I'm writing down the matrix A which is given. So A is given as -2, 1, 5, 4 plus D sine theta plus 2 sine theta minus D. And here in the third column, it is sine theta minus 2, only D, and minus sine theta plus 2 plus 2D. So this is the value of the matrix. So we have to find the determinant. It would be easier if we will be reducing the matrix. So basically what I'll be doing here is that I'll be applying the operation that is R3 changing to R3 minus 2 R2 plus R1. I'm doing so that the determinant would be easier to find. So let's do that. This is, yeah. So first two rows will be same. That is 2. It is minus 2, 4 plus D sine theta minus 2. Second is 1 sine theta plus 2 and D. And third is we have to apply the operation. Now it is R3, that is 5 minus 2 R2. That is 2 plus R2. So that is 3. 3 plus of minus 2, that is 1. So here it is 1. Now here sine theta minus D. This is okay, I'm writing it down. So this is here sine theta minus D minus 2 sine theta. Here it is 2 sine. In the question it is 2 sine. So it is 2 sine theta minus D minus 2 sine theta minus 4 plus D. So everything is cancelled out. And what we are left with? We are left with 0. So this reduces to 0. Similarly, let's apply this operation. So here it would be, I'm doing rough work here. So it is minus sine theta plus 2 plus 2D minus 2D minus sine theta minus minus plus plus 2. So 2 cancel with the 2 minus sine theta with this also cancelled, and 2D cancelled with 2D. Here it was plus. So yeah, plus minus these cancel. Therefore, this is also 0. Now we can expand this along R3. So I'm writing down expanding along R3. So it is easier to find out. So therefore, we have to find the determinant of 4 plus D sine theta plus 2 sine theta minus 2 and D. We are only left with this. Let's find out the determinant. So that would be 4D plus D square minus of, now it is sine theta plus 2 sine theta minus 2. So I can write it sine square theta minus 2 square, that is 4. Opening it, I get 4D plus D square minus sine square theta plus 4. So this is basically D plus 2 whole square. D plus 2 whole square minus sine square theta. Now
A minimum we are given in the question. So A would be minimum only if this value would be maximum. And we know that maximum value of sine square theta can be 1. It can't be beyond that. So if this is 1, applying that, then A minimum, that is determinant of A minimum, that is given as 8. So I'm applying 8 is equal to d plus 2 square. Maximum value of sine square theta is 1. So now what I get? 9 is equal to d plus 2 whole square. Now taking under root on both sides, so what I'll be getting? I'll be getting d plus 2. It can be plus minus 3. If I'll be taking the positive value, so taking the positive value, d become equal to 1. Taking the negative value, so d would be equal to minus 5. So let's see which is present in the option. So d minus 5. So it means that option B is the correct option. I hope this explanation is clear to you. Thank you. Hello guys, so in the question this determinant is given to us and the value of this determinant is a plus bx x minus a whole square. Then we have to find the pair abg, a comma b. So first write this determinant. So the determinant is x minus 4, 2x and 2x, 2x, x minus 4, 2x, then 2x, 2x and x minus 4. So just apply some properties of determinant in this question. So we can write C1 as C1 plus C2 plus C3. So just write C1 as C1 plus C2 plus C3. So x minus 4 plus 2x plus 2x is 2 into 2, 4, 4. 2 plus 2 is 4 and 1, 5. 5x minus 4. This is 5x minus 4. Now second row, 2x plus 2x plus 1x. So 5x minus 4. Here is also 5x minus 4. In the third also 2x plus 1 plus x is 5x minus 4. So this will be same because they are here is not applying any operation. So 2x. Then here is also 2x. Here is also 2x. And here is x minus 4. So now what can we do? Just apply some more properties of determinant. R1 can be written as R1 minus R2 and R2 can be written as R2 minus R3. So now R1 minus R2, 5x minus 5x cancel out and minus 4 plus 4 it will be also cancel out. So here 0, here is 0 and 2x minus x is x and x minus minus plus 4. So it will be plus 4 and 2x minus 2x is 0. Now R2 minus R3, so 5x minus 5, it will 5x minus 4 and 5x minus 4, so it will be cancelled out, so it will be 0. And x minus 4 minus 2x, so x minus 2x is minus x and minus 4. Now here is also 2x minus x is x and minus plus 4, so x plus 4. Now last row will be same because we are not applying any operation on last row. So 5x minus 4, 2x minus x minus 4. So now what will we do? Just expand this determinant. So when we will expand this determinant by 0, first column, so 0, so all will be 0. And for the second, now we will expand the row second column. So x minus 4. So just leave this row, leave this column, second column, and 0 into x minus 4, it will be 0 minus. So minus 5x minus 4 into x plus 4. So 5x minus 4 into x plus 4. And when we will expand through third column, so all will be 0. So there is no need to write. So just solve this. So minus x plus 4 into minus 5x minus 4 into x plus 4. So just multiply this minus x plus 4 into this. So we will get 5x minus 4 into x plus 4 whole square, because minus into minus will be plus, to 5x minus 4 into x plus 4 whole square. So just see in the question we have given the value of this determinant whole square, that is a plus bx into x minus a whole square. So this will be equal to a plus bx into x minus a whole square, So just apply these both sides
and we will get A will be equal to minus 4 and B will be equal to, so B will be equal to 5. So A comma B will be equal to minus 4 comma 5, minus 4 comma 5. Now just come back to the options and just see in the options. Option 4 is minus 4 comma 5. So our option 4 is correct. The question is, let P is equal to A ij be a 3 into 3 matrix and let Q is equal to Bij, where Bij is equal to 2 raised to power 1 plus j into Aij for 1 is less than or equal to ij and ij is less than or equal to 3. If the determinant of the P is 2, then the determinant of the matrix Q is, option A is 2 raised to power 10, option B is 2 raised to power 11, option C is 2 raised to power 12 and option D is 2 raised to power 13. Now here we have given that the P is equal to matrix containing elements Aij and it is of 3 into 3 order. Now here let Q is equal to the matrix containing elements. Here we have 2 square A11, here we have 2 cube A21 and here we have 2 4. Here let me correct it here. Here we have A31 and here we have 2 cube A12, here we have 2 4 A22 and here we have 2 raised to 5 and here we have A32. Next here we have 2 raised to power 4 into A13 and here we have 2 raised to power 5 into A23 and here we have 2 raised to power 6 and here we have A33. So this is the matrix Q. Now find the determinant Q. So here the determinant Q will be same, but here we have to add modulus instead of this matrix. So here we have 2 square into A11, here we have 2 cube into A21 and here we have 2 raised to power 4 into A31. Here we have 2 cube into A12, here 2 raised to power 4 into A22, here we have 2 raised to power 5 into A32. Here we have 2 raised to power 4 into A13, here we have 2 raised to power 5 into A23. Let me correct it here, this is A23 and here we have 2 raised to power 6 into A33. Now here we will take 2 square common from this column and here we will take 2 cube common from this column and here we will take 2 raised to power 4 common from this column. So here we have cube is equal to 2 square into 2 cube into 2 raised to power 4 and here we have remaining A11, A12 and A13. Here we have 2 A21, here we have 2 A22 and here we have 2 A23. Here we have 2 square A31, here we have 2 square A32 and here we have 2 square A33. Let me correct it here. Here we have 2 square A31. Now we will take 2 common from this row and 2 square common from this row. So here we have Q is equal to 2 square into 2 raised to power 3 into 2 raised to power 4 into, here we will take 2 common and into, here we will take 2 square also common. So finally here we have A11, A12, A13, A21, A22, A23. Here we have A31, A32 and A33. Now here we have Q is equal to, here base is same, so the powers will add. So here we have 2 raised to power 12 into, here we have this value is our P according to the question, and also we have given that the determinant of P is our 2. So from here we have Q is equal to 2 raised to power 12 into P. So and here also P is our 2. So from here we have Q is equal to 2 raised to power 12 into 2.
So here powers will add again. So here we have q is equal to 2 raised to power 13. And if we look at our option, so from here option D is our correct answer. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं. इफ़ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा टू अल्फ़ा एंड ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज. सो हमें वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करनी है. सो हम एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं. हम ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब. ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ डिटर्मिनेंट. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इक्वल्स टू 125. सो 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब. सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 5. सो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 हम इसको एज्यूम कर लेते हैं. अब हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फ़ा टू अल्फ़ा. सो ए की वैल्यू हमें गिवन है अल्फ़ा 2 और 2 और अल्फ़ा. अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करते हैं. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फ़ा टू अल्फ़ा. अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम इसको इस डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं. अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास आएगा 5 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4. यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 4 9. देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ऑफ 3. सो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा मैच कर रहा है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. थैंक यू. So the question is the number of distinct real roots of determinant sin x cos x cos x cos x sin x cos x cos x cos x sin x equal to 0 in the interval minus pi by 4 to pi by 4 is. So पहले क्या करते हैं, so डिटरमिनेंट जो दिया गया उसको सॉल्व करते हैं. डिटरमिनेंट दिया है हमें sin x cos x cos x cos x sin x cos x cos x cos x sin x इक्वल टू क्या दिया गया, 0 दिया है. सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं C1 में चेंज करता हूँ, C1 प्लस में C2 करता हूँ. तो क्या बन जाएगा, अप्लाइंग, यहाँ बन जाएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ sin x प्लस 2 cos x हो जाएगा, प्लस C3 भी करेंगे, सॉरी C1 में चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 का. तो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस में 2 cos x हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा sin x प्लस 2 cos x हो जाएगा. सेम हियर यहाँ पे भी हो जाएगा sin x प्लस में 2 टाइम्स ऑफ cos x हो जाएगा. C2 सेम रहेगी एंड C3 भी सेम रहेगी. डिटरमिनेंट है इसका 0. अब यहाँ से देखें तो C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, sin x प्लस 2 cos x कॉमन आ रहा है. सो कॉमन ले लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा sin x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x हमने कॉमन लिया. देन ये बन जाएगा हमारा 1 cos x sin x cos x, यहाँ हो जाएगा cos x sin x. इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं R2 में चेंज करता हूँ, R2 माइनस R1 एंड R3 में चेंज करता हूँ, R3 माइनस में R1. अप्लाई करता हूँ इनको. सो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा sin x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x
determinant of फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकेंड रो हमारी हो जाएगी 1 - 1 0 sin x माइनस में cos x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, R3 हो जाएगी 0 0 sin x माइनस में cos x हो जाएगी। अब इसको C1 के रेस्पेक्ट में खोलते हैं, ओपन करते हैं डिटरमिनेंट्स को, तो ये हो जाएगा sin x प्लस में 2 टाइम्स ऑफ cos x इंटू में ये क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, -0 + 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे क्या आ गए, एक तो आ गया हमारा sin x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा sin x माइनस cos x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया tan x आ गया हमारा, माइनस का 2 आ गया, फिर यहाँ से tan x हमारा क्या आ गया, tan x आ गया हमारा 1 आ गया। हमें x कहाँ तक दिया गया है, x दिया हमें -π/4 से π/4 तक दिया है। सो -π/4 से π/4 के बीच में tan x क्या होगा, tan x हमारा -1 to 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ही सही होगी। सो tan x इक्वल टू जब 1 होगा, tan x इक्वल टू 1, तो x हमारा क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, तो इसके कितने रूट होंगे, केवल एक रूट होगा। So this is the answer of this question, 1 root. Okay, thank you. Hello students, the parameter on which the value of the determinant we have is this. This is the determinant we have given. Okay, and it does not depend as in what. So here some option we have given that A, B, C and D. Our option is also given and we'll have to tell that which one is correct option. Okay, so now let delta is equals to 1a square cos p minus dx sin p minus dx. This is what we have given determinant. Okay, and I'm writing it here, by which you guys can understand it very well. P plus D this. Okay, so this is what we have given in the question. Now to make it more easy, what we'll do is we'll just do applying in column first plus column second. So for the clear of friends, I will tell you that this is column first, this is column second, and this is column third. This is row 1, row 2, row 3. Okay, so in this column first, what we'll do is we'll add column second also. Now let's start. Let's see what we'll get from here. Okay, so from this, what we will get is really matter for us. So let's start. Now we will get from here is delta, which will be equal to column second and third will be same, but first will be 1 plus a, right? Column first and column third will be more easy for us, right? So we will add that. Okay, so let's start. I will write it again. We will correct it. We will add column first and column third. 1 plus a square, right? And cos p minus dx plus cos p plus dx, and third one is sin p minus dx plus sin p plus dx. Okay, and other will be same, sin px a square
cos p plus dx, and here will be similarly sin plus dx. Now what we'll do is we'll just add these two. So from that what we will get is delta 1 plus a square and 2 cos px cos dx, and here 2 sin px into cos dx. This is what we will get. It will be same, cos px sin px, here will be a square cos p plus d whole x and sin p plus d x. Okay, so let's do it. This is a determinant that we have got after solving this. Now what we'll do, we are gonna apply in column first, make it more easy. We are gonna apply column first minus column second with 2 into cos dx column second. Okay, just like so. Let's see from here what we will get. We'll write here. Okay, let me tell you one thing. In column first, just like 2 cos px, I will solve it like 2 cos px cos dx minus 2 cos dx and cos dx. So this is what we will get 0. Similarly, in this case to this case, after multiplying this case, it will be also same thing. Okay, understand it? So let's start. Here will be cos dx. Now solve it. Delta. So after solving this, what we will get here is 1 plus a square minus 2 cos dx a square. It will be 0 and 0, and it will be similarly cos px sin px. Here will be cos p plus dx, and here will be sin p plus dx. Okay, so now from here, let's see what we will get is 1 plus a square minus 2 a cos dx. After spending this, we will get this to this will be sin p plus d into cos px. What we are doing is cross multiplications. Okay, understand? And here will be sin px into cos p plus d x. Okay, so what you will get finally is delta, which will be equal to 1 plus a square minus 2a cos dx into sin dx, which is independent of p. So what we have seen is that p is our independent. So the correct option will be B. Okay, thank you. हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द डिटर्मिनेंट एक्स पी प्लस वाई एक्स वाई वाई पी प्लस जेड वाई जेड एंड 0 एक्स पी प्लस वाई पी प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इफ़. अब हमें 4 कंडीशंस गिवन है. एक्स वाई जेड आर इन ए पी, एक्स वाई जेड आर इन जी पी या एच पी, या हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड या जेड एक्स आर इन ए पी. सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स पी प्लस वाई एक्स वाई वाई पी प्लस जेड वाई जेड, और यहाँ क्या गिवन है? 0 एक्स पी प्लस वाई, और यहाँ पे गिवन है वाई पी प्लस जेड इज इक्वल टू 0. सो ये हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है. सो इसके अंदर हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, दैट विल बी R3 चेंजेस फ्रॉम R3 माइनस ऑफ R2. सो अब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं इसके अंदर. सो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी एक्स प्लस वाई एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी वाई प्लस जेड वाई जेड. अब हम R3 माइनस R2 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस पी वाई माइनस जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स पी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई पी आ जाएगा, और इसकी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा हमारे पास. सो अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं? अब हम एक दूसरा रो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे,
वो रो ऑपरेशन हमारा क्या होगा, R3 चेंजेस फ्रॉम R3 माइनस ऑफ P टाइम्स ऑफ R1। हम ये वाला रो ऑपरेशन लगाते हैं अब। सो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन अब, सो यहाँ से हम ले सकते हैं पी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं पी वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा z, और यहाँ पे R3 माइनस पी टाइम्स ऑफ R1 अगर हम करेंगे सो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ पी वाई माइनस जेड माइनस पी टाइम्स ऑफ पी एक्स प्लस वाई आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम इनको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है हमारा, इक्वल्स टू 0 है। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारी सेकंड टर्म, ये इसको अगर हम करते हैं R3 ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अलोंग दी रो 3 इसको हम एक्सपेंड करेंगे, R3 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सो इसको कैसे ले सकते हैं हम, यहाँ से ले सकते हैं माइनस ऑफ पी वाई माइनस ऑफ जेड माइनस ऑफ पी टाइम्स ऑफ पी एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एक्स जेड माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अब हम सेकंड टर्म हमें 0 है, दैट मीन्स प्लस 0 और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हम इस फर्स्ट वाले में से हम माइनस का साइन बाहर कॉमन आउट ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ पी वाई प्लस जेड प्लस पी टाइम्स ऑफ पी एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स जेड माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अगर इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे सो हमारे पास, हम फर्स्ट टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर अगर हम सेकंड टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई इंटू वाई ले सकते हैं वाई स्क्वायर को। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। अब ये वाली सीरीज हमारी कौन सा, ये रेशियो हमारा सेम है, दैट मीन्स हमारा रेशियो किस में सेम होता है, वो होता है जीपी वाली टर्म में, देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन जीपी। सो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।